Hello everybody, Namaskar. Welcome to my YouTube channel Kidsgrow Walkway. So आज का topic है phonics. So we will be covering everything related to phonics in this video. So without wasting time, let's move on to today's video part. Thank you. So what is phonics? I'm sure there are many parents here who must be wondering what is phonics? Phonics क्या है? इसके technical terms क्या है? इसे बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है? इसके methods क्या है? So all these questions will be answered in this video. So please watch the video till the end and do not skip it. So what is phonics? Phonics is a method of teaching any language to a child. जी हाँ, phonics के through आप अपने बच्चों को कोई भी language सिखा सकते हो. So coming on to English language, phonics के through आप अपने बच्चों को English language read करना और लिखना भी सिखा सकते हो. Now the second question is, how do we teach phonics to our child? हम अपने बच्चों को phonics कैसे सिखाएं? So मैं कहूंगी कि आप अपने बच्चों को phonics उनकी phonemic awareness develop करके सिखा सकते हैं. Now what is phonemic awareness? It is something that a child hears, watches and establishes a connection between the same is called phonemic awareness. It is the ability of a child to hear the smallest unit of a sound called as phonemes, that is called as phonemic awareness. आसान भाषा में मैं कहना चाहूँ तो जो बच्चा देखता है, सुनता है और उन दोनों में जो कनेक्शन प्राप्त करता है उसी को हम phonemic awareness बोलते हैं. So we have to develop the phonemic awareness of a child. हम जितने जल्दी बच्चे की phonemic awareness develop कर पाएंगे, बच्चा उतने ही जल्दी इंग्लिश लिख पाएगा, बोल पाएगा और रीड भी कर पाएगा. Now the third question is there any difference between phonics and phonetics? Sometimes we come across the word phonics and sometimes phonetics. So we get confused. What is phonics and phonetics? Is it the same or is there any difference? So मैं कहना चाहूँ तो हाँ, इन दोनों में difference है. So phonics is a method of teaching reading to a child by establishing a connection between letters and sounds, while phonetics is a scientific way of understanding how the sounds are produced and understood. So phonics is usually used for the children for reading, for teaching them reading, while phonetics is used by the language researchers and the speech therapist. Now the next question is about synthetic phonics. Now as a parent, most of the parents are worried कि हम अपने बच्चों को synthetic phonics कैसे सिखाएं? How do we teach synthetic phonics to our child? Because आजकल बहुत सारे schools में यही method use की जाती है. Nowadays, nobody is using the analytical way of teaching phonics to a child. Now to tell you, there are many methods of teaching synthetic phonics to a child. Like alphabetical order way, A to Z, teaching the sounds of all these letters and then blending together to form a word. अब इसके बहुत सारे curriculums भी available है, but जो सबसे ज़्यादा popular है world में, in fact also in India, is the one that is called as Jolly Phonics. जी हाँ. Now in Jolly Phonics, the sounds are not taught in a sequence. Rather, ये Jolly Phonics में sounds के groups बनाए गए हैं, like group 1 to group 7, और बच्चों को Jolly Phonics इसी sequence में पढ़ाया जाता है. Now, why this method is very popular? ये method इतना popular क्यों है? मैं आपको कहना चाहूँ तो English देखो एक बहुत ही technical language है और कई बार words जैसे लिखे जाते हैं वैसे बोले नहीं जाते और कई बार जैसे बोले जाते हैं वैसे लिखे नहीं जाते. So इन सारे सवालों के जवाब इस Jolly Phonics में है. For example, the word happy. Like हमें ending में क्या सुनाई देता है? Happy, E. So we will say इसको HAPPE क्यों नहीं लिखा जाता है? And why it's HAPPY? So इन सारे सवालों के जवाब इस Jolly Phonics में दिए गए हैं. Now Jolly Phonics uses a multi-sensory approach. This means बच्चों को Jolly Phonics में sounds as it is नहीं पढ़ाए जाते हैं, बल्कि एक story के form में पढ़ाए जाते हैं. And then the story is linked with many jingles, poems, songs, which is made very interesting for the child to learn the sounds. So the child learns phonics in a very fun-loving and entertaining way through which there is a lot of scope for the child to sing, dance and learn phonics at the same time. Now in Jolly Phonics, there are 5 basic skills. We can say that there are 5 pillars. So Jolly Phonics is divided into 5 parts in a very systematic way
जैसे कौन सा पार्ट कब पढ़ाना है, किसके साथ पढ़ाना है, ये बहुत ही अच्छी तरीके से जॉली फोनिक्स में दिया गया है, जिसके हेल्प से द चाइल्ड कैन लर्न जॉली फोनिक्स इन अ वेरी इजी वे. Now the first one is letter sound. That means learning the sounds of the letters through the mode of phonics. Learning letter formation. Now in Jolly Phonics, the child is encouraged not only to read but also to write in a proper way right from a smaller age. और इसके सारे करिकुलम्स भी दिए गए हैं जिसके थ्रू बच्चा उसकी हैंडराइटिंग भी इम्प्रूव कर सकता है. Now the third skill is learning blending. Now what is blending? Suppose आपको कहीं वर्ल्ड टूर पर जाना है, आपने डेस्टिनेशंस भी फिक्स करके रखे हैं कि मुझे ये इन 10 डेस्टिनेशंस पर जाना है, एंड आपने जर्नी शुरू की, एंड देन यू गेट कंफ्यूज कि हम पहले कहाँ जाए, यू डोंट नो द रूट एग्जैक्टली फ्रॉम वेयर टू गो, फ्रॉम विच डेस्टिनेशन यू हैव टू गो टू विच डेस्टिनेशन. तो आप एंड में कहीं इस जगह पे पहुंच जाओगे जहां पे आपको जाना ही नहीं था. सो ब्लेंडिंग इज ऑल्सो समवॉट द सेम. इन ब्लेंडिंग बच्चों को साउंड्स तो याद हो जाते हैं, लाइक साउंड्स आर नथिंग बट डेस्टिनेशंस, बट अगर वो साउंड्स को बच्चों को अच्छी तरीके से ब्लेंड नहीं करते आए तो बच्चा एक प्रॉपर वर्ड फॉर्म कर ही नहीं पाएगा. सो व्हाट इज ब्लेंडिंग? ब्लेंडिंग इज जॉइनिंग साउंड्स टुगेदर to form a word so that the child can read it. Now the fourth basic skill is segmenting. Now what is segmenting? Segmenting is nothing but just the opposite of blending. In blending बच्चा साउंड्स को मर्ज करता है ताकि वो एक वर्ड फॉर्म करके रीड कर पाए. In segmenting the word is broken down into sounds. बच्चा वो साउंड वर्ड को ब्रेक करता है साउंड्स में ताकि वो अच्छे से लिख पाए. ना सेगमेंटिंग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर मान लो आपने एक बच्चे को वर्ड डिक्टेट किया, बच्चा जब तक वो वर्ड को इंडिविजुअल साउंड्स में ब्रेक नहीं कर पाएगा तब तक वो अच्छी तरीके से लिख भी नहीं पाएगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ आपने वर्ड डिक्टेट किया पैन, बच्चा जब तक वो वर्ड को प में ब्रेक नहीं कर पाएगा तब तक वो वर्ड पैन लिख भी नहीं पाएगा. नाउ द फिफ्थ बेसिक स्किल इज ट्रिकी वर्ड्स और साइट वर्ड्स. What are tricky words or sight words? Tricky words are nothing but इनके कोई रूल्स नहीं दिए गए हैं जॉली फोनिक्स में, ये कोई रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, इनको बच्चों को एज इट इज पढ़ाना रहता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल आई, माई, योर, द, these are all tricky words and you'll find the list of entire tricky words in Jolly Phonics. Now in Jolly Phonics, the points mentioned from 1 to 4 are taught as it is simultaneously side by side, और जो tricky words रहते हैं like in the 5th point are taught little later. This was the entire information about phonics. I hope it makes sense. I hope this video makes sense and I hope many of you will find it useful. So if you like the content of this video and would again like to watch me, then stay tuned and follow me.